हिंदुस्तान की तवारीख के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें नेहरू का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लिया जाता है। और जहां आज हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वो तीन मूर्ति भवन है, जिसे नेहरू म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता था। जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री से कहा गया कि वो यहाँ आकर रहे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद इसको म्यूज़ियम घोषित कर दिया गया। लेकिन हाल ही में इसे लेकर नया विवाद शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री संग्रहालय के बाद प्रधानमंत्री म्यूज़ियम इसका नाम रख दिया गया। फिर उसके बाद एक बहस शुरू हुई कि क्या जवाहरलाल नेहरू की विरासत के साथ छेड़खानी की जा रही है। लेकिन जब हमने यहाँ पर बात की, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस चेयरमैन है सूर्य प्रकाश, उनका कहना है कि हमने नेहरू की विरासत को सहेज कर और संभाल कर रखा है और उसको एक एक्सपेंशन दिया है। तो हम यहाँ समझने के लिए आए हैं उन्हीं से कि क्या क्या इस संग्रहालय में किया गया है और अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में जब यहाँ पर जानकारियाँ शामिल की गई है तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं और कैसे ये आने वाले इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण राह तय करेगा। तीन मूर्ति भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सरकारी निवास। उनकी मृत्यु के 6 दशक बाद भी वे भारतीय राजनीति के केंद्र में अलग अलग कारणों से बने हुए हैं और बीते दिनों ये कारण रहा नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हो जाना। तो हमने सोचा कि तीन मूर्ति की इमारत में बचे जवाहर के अवशेषों से उस व्यक्ति की शिनाख्त की जाए जो बार बार उनके सामने खड़ा हो जाता है, जो नेहरू से बड़ा बनना चाहता है या नेहरू बनना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू कई तरह की आशाओं, निराशाओं, सराहनाओं और आलोचनाओं के नायक रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक इमारत में उन साक्ष्यों की खोज की कोशिश होगी जो जवाहर को जानने का मौका देती है। जब ये बहस शुरू होती है तो उसके पीछे रीज़न भी होता है कि अभी हाल ही में जो नेहरू म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया। तो ये नाम बदलने का ट्रेडिशन जो है वो काफ़ी बढ़ा है देश में। तो इसकी बात करें, इस संस्था की बात करें, तो यहाँ नाम बदलने की क्या ज़रूरत है, उसको लेकर क्या बहस हुई आप लोगों की मीटिंग में? वो कैसे आप लोग उस पे आए कि अब नाम बदल देना चाहिए? अब क्या है, I'll explain it this way. If you see, the remit of this institution changed. So following the diversification and democratization of the remit of this institution, it was only a natural corollary to change the name. It is Nehru Memorial Museum and Library. Now it was decided to build the Prime Minister's Museum here. So all Prime Ministers are housed here. So I think the name of the institution must be in consonance with the larger remit and responsibility given to this institution. So that is how the name has got changed to Prime Minister's Museum and Library. And when I talk of democratization and diversification, I want to tell you that democracy and diversity are two sides of the same coin. Where there is diversity, there is democracy. Where there is democracy, there is diversity. Just look around the world and you will get an answer to this, what I am saying. So, when you talk of diversity, let us begin in as far as politics is concerned. Let us begin as far as national leadership is concerned. We have had such diversity in our national leadership. Should that not be acknowledged? In all these 70 years, we have had 15 prime ministers. Have you had one institution which acknowledges the work of all prime ministers? Should we not have one such? So when this was proposed, I was one of those who felt it is a very great idea. Given the diversity in national leadership, it is very important for us to have an institution like this. I say, we get lakhs of visitors now. Sometimes it touches 3,000-4,000 over the weekend, every day. There are people coming from Karnataka who feel excited looking at the Devegowda gallery. There are people coming from Andhra Pradesh who feel proud when they see P.V. Narasimha Rao and his phenomenal contribution over those 5 years depicted here. People from western Uttar Pradesh, North India, Charan Singh, who are admirers of Charan Singh, Chandrasekhar, V.P. Singh, and of course the Gandhi family, Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Please go and see the Indira Gandhi and Rajiv Gandhi galleries apart from the Nehru gallery.
you will get an idea of how we have showcased their work. And I'm telling you, there are a lot of things that we need to be proud of in terms of what our prime ministers have done. And by and large, that is the effort. And it's also, in a sense, when you see the life stories and work done by every prime minister in chronology, you will get to see this is the history of India over the last 75 years since independence. This is the journey of India, and you see that journey now in the प्रधानमंत्री संग्रहालय। सर हमें बताइए कि ये संग्रहालय जो बना इसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या डिपिक्शंस हैं यहाँ पर नेहरू से लेके अभी नरेंद्र मोदी लेटेस्ट तक। अब क्या है कि पहले ये तीन मूर्ति भवन जो है जहाँ हम खड़े हैं, ये यहाँ नेहरू म्यूज़ियम बनाया था, और कुछ साल पहले ये एक सोच था कि यहाँ दिल्ली में एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बनना चाहिए। मतलब सब प्रधानमंत्रियों का योगदान जो है, उनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ उसको लोगों के सामने पेश करने का एक व्यवस्था होना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सोच था कि ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम बनना है। तो उसमें ये जगह का तलाश जो है, उसमें ये मालूम हुआ कि यहाँ जो ये स्टेट है तीन मूर्ति, इसमें 28 एकड़ ज़मीन है। यहाँ ये तीन मूर्ति भवन है, इसके पीछे बहुत जगह है, साइड्स में बहुत जगह है। तो ये नया इमारत यहाँ इसके पीछे अब उसका उद्घाटन पिछले साल हुआ है, और उसमें 14 प्रधानमंत्रियों का गैलरीज वहाँ है। और ये पुराना जो नेहरू म्यूज़ियम है, और ऐसे ही ये पूरा तीन मूर्ति भवन में नेहरू जी का गैलरीज है। कई साल पहले ये मोदी जी का एक सोच था कि ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम होना चाहिए दिल्ली में, और उस समय उन्होंने ये दायित्व जो है नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी जो संस्था है, इस संस्था को वो दे दिया ये जिम्मेदारी। और उसके बाद ये संस्था उस पर काम शुरू की है। इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब बातें चली। कुछ 4-5 साल लगे ये सब तय होने के बाद। उसके बाद उसका डिज़ाइन बना, द आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, देन द डिज़ाइन, ये सब बातें। सर इसके आर्किटेक्चर के बारे में बताइए। जो पीएम संग्रहालय का आर्किटेक्चर है वो क्या डिपिक्ट करता है, वो क्या बताता है? एक्चुअली आप उस इमारत को देखें तो आपको मालूम होगा, यू सी इट्स लाइक द हैंड्स ऑफ द पीपल होल्डिंग अप द अशोक चक्र। वो डिज़ाइन ऐसे बनाया है, एंड दैट्स अ वेरी नाइस डिज़ाइन। एंड आवर लोगो इज आल्सो बेस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। और जो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये नेहरू ब्लॉक हुआ करता था कि नेहरू म्यूज़ियम हुआ करता था कि नेहरू के यहाँ स्टडी टेबल भी है, उनका रूम है जहाँ वो पढ़ाई करते थे, बेडरूम है। तो वहाँ इस ब्लॉक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं पीएम संग्रहालय के बाद? वो तो पुराना नेहरू म्यूज़ियम में उनका बेडरूम, उनका स्टडी वगैरह वगैरह, सिटिंग रूम, वो सब जैसे है उसको हम इट हैज़ बीन रिफर्बिश्ड, वो किया है हमने। लेकिन उसके अलावा यहाँ जो है ना, ये पूरा ये गैलरीज आप देखेंगे कि नेहरू जी के 17 साल कार्यकाल में जो कुछ काम हुआ। ही टॉक्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो शुरू हुए, और मेजर इरिगेशन डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग कमीशन, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, 5-year प्लान्स, ये सब बातें, बहुत कुछ काम हुआ है उस समय। बुनियादी काम इस देश के प्रगति के लिए वो एक बुनियाद जो उन्होंने रखा, वो आप यहाँ देख सकते हैं। हियर यू हैव जवाहरलाल नेहरू's very famous Tryst with Destiny speech. The text is here. In fact, this is his handwritten text, which you can see here. The photocopy of that is here in our
Sangrahalaya. And long years ago. Yeah, but it's interesting here. He says long years ago we made a date with destiny. बाद में वो डेट जो है ट्रिस्ट बन गया. ठीक है. M.O. Mathai, who was his secretary, he claims that he saw the draft and told Nehru that he should make it tryst with destiny. ठीक है. Whether that is right or not, I do not know. But in the original draft, it is date with destiny. वो फिर उसी के नाम से फेमस हो गया वो पूरा स्पीच. It's a very nice, catchy phrase, tryst with destiny. And this is a letter of Jawaharlal Nehru to Vallabhbhai Patel. This is about destruction of mosques. वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बारे में कहा भी जाता है कि एक थोड़ी रसाकशी थी, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ करता था, और अभी पिछले कुछ सालों में ये बहस तेज भी हुई है. तो आप जब उनके लेटर्स को देखते हैं, आप उनके स्पीचेस को देखते हैं, उनके आसपास जब वो मिलते थे, क्योंकि सरदार पटेल यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहते थे, क्योंकि ये कमांडर इन चीफ का घर हुआ करता था, सामने वाइसरॉय का हुआ करता था, तो यहाँ पर आज़ादी के बाद तय हुआ कि नेहरू यहाँ रहेंगे. तो इन दोनों के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल के? और इन दोनों के रिश्ते में वन सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं बताता हूँ, विच स्टार्टेड देयर इन द नेहरू वल्लभ भाई पटेल रिलेशनशिप, विच परसिस्ट इवन टू टुडे, इज सेक्युलरिज्म वर्सेस अपीजमेंट. कांग्रेस लंबे समय से कहती रही है कि नेहरू की विरासत के साथ मौजूदा मोदी सरकार छेड़छाड़ कर रही है. 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था. इस संग्रहालय को तकनीक आधारित बनाया गया है, जहां देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके कार्यकाल के बारे में विस्तार से जानकारियां उपलब्ध हैं. सर, ये लेगेसी को सस्टेन किया हुआ है यहाँ पर, तो ये एक क्रिटिसिज्म होता है कि नेहरू की लेगेसी को पे खतरा है, नेहरू की लेगेसी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. तो वो उस बहस को आप कैसे देखते हैं, जबकि आपकी इतनी सारी चीज़ों को और जोड़ा गया? नहीं, उसका जवाब बहुत सिंपल है, बहुत स्पष्ट है. प्लीज़ आप आके प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखिए, नेहरू गैलरी को देखिए, उसके बाद आपका जो भी टिप्पणी है हम सुनने के लिए तैयार हैं. और ये एक पब्लिक संस्था है, इसलिए आप जो भी कहेंगे उसको हम सुनेंगे. इसमें और भी कुछ करना है तो ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले आप इसको देखना चाहिए. बहुत सारे लोग बिना देख के कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो उचित नहीं है. दिस इज एक्चुअली ए ट्रिब्यूट टू जवाहरलाल नेहरू. दिस इज व्हेन ही पास्ड अवे. सो वी हैव अ वेरी टचिंग वीडियो हियर ऑफ हिज last journey, and here are the newspaper headlines. Millions join Nehru's funeral, pledged to realize his ideals. Okay, so that was a very big loss for India. He'd been a great freedom fighter, led the freedom movement, very close associate of Mahatma Gandhi. किसी ने वो कहा नेहरू का लेगेसी जो है वो ख़त्म हो गया. आपको लगता है नेहरू, दिस होल बिल्डिंग इन अ सेंस, दिस एंटायर फ्लोर इन दिस बिल्डिंग इज डिवोटेड टू जवाहरलाल नेहरू. नेहरू का लेगेसी ख़त्म हो गया है क्या? दिस इज एक्चुअली ए विजिटर टुडे टू नेहरू म्यूजियम. इफ ही स्पेंड्स अ लिटिल टाइम हियर, ही विल गेट द होल स्टोरी, द ऑल एस्पेक्ट्स of Nehru, 360 degrees, all the great work he had done, all the challenges he faced, including 1962, etc., etc. So where is the question of wiping out Nehru's legacy? So this is the industrial policy. First industrial policy, socialist economics. You know, he wanted the state, to have the control of the economy. You know, like in a communist state, the state will own and control, means of production. By and large, it was that, though there was some space for private sector. In the first years of independence,
In this room, you see what happened in 1962, the Sino-Indian War, the aggression of China, and the major implications it had for our defense and for the unity, integrity of India, and how that influenced our defense budget and the planning for defense. क्या आप समझते हैं कि उस युद्ध के बाद फिर चाइना से अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए या अभी उस दिशा में कुछ किया जा रहा है? You see, China is our neighbor. So, you have conflict with your neighbor, you must try to resolve it. So, India has been on that mode ever since Nehru's days. Sometimes we have been able to succeed, sometimes वो स्थगित हो गया है. There has not been much advance in the area of our in progress in terms of talks and settlement, but the work is on. और सर But as we negotiate for peace, as a nation, I think it's very important for us to take care of our defense and to do whatever is necessary to preserve the unity and integrity of India. And I think several governments since then have started paying attention to that. In the first phase of Nehru's phase, there wasn't sufficient attention paid to that because Nehru sincerely believed this Hindi Chini bye-bye thing. Nehru's sitting room, much of the furniture and everything has been preserved the way it was at that time. And of course, this has been done up a bit, but otherwise by and large this is what it was. Yes, उस ज़माने में this is how it used to be. And this is his study. He used to work here till late in the night. In fact, some of the files that were there on his table at that time, you know, in his last days, that is also kept there. That is his study and chair. टेबल पे सर बुद्धा भी दिखते हैं तो Ah, yes, yes. And also if you see the telephone instruments of those days. So, and the books that were there in a study at that time, it's all preserved. उससे पता चलता है कि उस समय के नेता पढ़ा भी खूब करते थे. हाँ हाँ, बहुत पढ़ते थे. बहुत पढ़ते थे, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से वो उनका जो भाषण होता था. After Nehru, you must hear Dr. Radhakrishna in 15th August. After Nehru, he speaks. You must hear Radhakrishna. It's really very good. Okay, this is Nehru's bedroom. This is bedroom, the way it was at that time. By and large, preserved the way it is. That was his bed. A breezy account of Nehru's life, family, early education, then becoming a barrister, then his early influences. He would accompany his father to Congress sessions. He was influenced by Gopal Krishna Gokhale's Servants of India Society, which was working to unite and train Indians of different ethnicities, communities for the country's welfare. There's a quote from his autobiography. I never thought of joining it, partly because its politics were too moderate for me, and partly because I had no intention then of giving up my profession. Then Bal Gangadhar Tilak, Anne Besant, okay?
Then we come to marriage on 8th February 1916, Vasant Panchami. Pandit Jawaharlal Nehru married Kamala Kaul Nehru, who came from a Kashmiri family. 1917, Indira Gandhi was born. Then his association Mahatma Gandhi, imprisonment, times he was imprisoned. के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? गांधी के साथ भी 1928-29 के अराउंड काफ़ी मतभेद हुए जब इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज की बात नेहरू कर रहे थे, तो फिर गांधी ने भी उसके बारे में खूब सोचा, तब उन्होंने कहा कि नहीं पूर्ण स्वराज की बात ठीक है, लेकिन मोतीलाल नेहरू दूसरी तरफ थे, वो पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे थे, वो डोमिनियन रूल की बात कर रहे थे। तो उसको लेकर भी उन दोनों में मतभेद चल रहे थे मोतीलाल नेहरू और नेहरू के बीच। तो फिर मोतीलाल नेहरू आते हैं गांधी के पास समझाने के लिए कि ये मॉडरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा ही लेफ्ट की तरफ झुकाव हो रहा है। तो उसमें आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि नेहरू गांधी के? नहीं, if you see their relationship and all the literature that's available, their correspondence, there were times when they disagreed, but the disagreement was not of such a nature that it would rupture their relationship. That never happened. And then we come to leader of a new mood. When he elected Congress president again for 2 successive terms, and he took keen interest in world affairs, foreign affairs of Congress. Then 1937 to 42 and towards freedom 42 to 46. All it's very interesting because it's in a sense, it's a one-stop shop. You can just, if you have 10-15 minutes, you can absorb all of this in sequence. नेहरू का ड्राइंग रूम और स्टडी रूम एक बड़ी दुनिया समेटे हुए नजर आता है। सादगी में भी एक अलग तरह की भव्यता और लोकतांत्रिक पहलू भी दिखता है। मेज पर बुद्ध की मूर्ति, इंक की बोतल, कलम और डायरियां अपनी जगह बनाए दिखती हैं और किताबों की एक बड़ी दुनिया देखकर साफ नजर आता है कि नेहरू कितना पढ़ते होंगे। गिफ्ट्स भी काफ़ी मिले जब बाहर की दुनिया में गए। Lot of that, some of it which was here, we have put up in the Toshakhana. तो ये थे हमारे साथ प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि नेहरू की विरासत क्या थी, नेहरू की विरासत को कैसे सहेजा गया और भी प्रधानमंत्रियों की विरासत को कैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई। माहिरा खान के साथ मैं कृष्ण मुरारी।